Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, with the notification of CBO, now some people are worried whether it is replacement of PO or not. SBI has changed system of transfers and postings in SBI through their internal communication. But does it mean that they will not recruit PO? It is not clear from this notification. If we see this notification minutely, some points are emerging. One is this is only of 7 circles and recruitment is circle level. That means one can only apply for a particular state, and selection is from the existing officers from other banks, which shows State Bank is in dire need of staff, so they are taking people those are already working in other banks. If they want to join State Bank, they are opening this door to them. Does it mean that they will not recruit probation officer? From this circular, nothing can be inferred like this, because there are many circles in State Bank of India, and this recruitment is not for all the circles. So there are vacancies in those circles also. So how they will fill? They will fill through PO, TO, like that. So we need not have a knee-jerk reaction to this advertisement. Yes, this advertisement has created doubt in our mind whether PO notification will come or not, whether the freshers will get a chance to enter State Bank of India or only experienced bank people will get chance to enter State Bank of India as an officer. All these things, this mist will be clear in coming days. Whenever some vacancies comes, sometimes some confusion comes. Yesterday, the screenshot was in circulation. Then I tried to get information from some officers. Whatever information officers gave, I shared with you. So there was a confusion between this word and PO. Now, even after release of this notification, no one certainly says the fate of PO. Some people are taking very extreme stand. Sir, PO will not come. No, I don't subscribe to this view. We should wait and have a clarity from State Bank of India. Because if we see logically, here only they are attracting some existing employees from other banks to join State Bank of India through interview process. Now the question is, who will come for this selection? Whether the existing employees without any benefit of promotion or salary rise, will they come or they will not come? Because the salary offered is not equivalent to PO. It is lesser than this. They are offering salary equivalent to the scale in which they are placed plus the number of years they put in that organization that they are already getting. So whether this is a replacement of PO, it is very difficult to say. We have to wait, because this is only a very restrictive sort of a recruitment, where recruitment is only for 7 circles, whereas SBI has other circles also. So I will advise you, don't lose hope, because sometimes some news come, we get cheerful, then the news turn out to be different, we become sad. So we should not go to the extremes. We should maintain balance and continue focus on our studies, because IBPS notification will definitely come, because already they have made a calendar and they are looking for it. If certain officers move from nationalized banks or RRBs to State Bank of India, in turn these are becoming vacancies for the unemployed youth only. Ultimately, if banking industry has to take officer, it has to come from the new people only.
If people move from one organization to another, in another organization vacancy will be created. So there is no need of having unnecessary panic. Such type of readjustments may happen. This may be one-off. This may be something like that. My only advice is, as and when I get some information, I share with you. Sometimes this information is premature also, but my idea is just to keep you aware what is happening in the system, so that you are always agile, you are always active, and you can take proactive steps. But by any means, don't get discouraged by this notification. It does not mean by any means that we can draw conclusions like this that PO will not open. No. Whether it will happen or not, we will come to know in few days. I am trying to gather the information. As soon as I get the information, I will share with you. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब आज CBO का नोटिफिकेशन आ गया. जो हम लोग सोच रहे थे कि ये PO की जगह आएगा, PO वाला नोटिफिकेशन है, वो नहीं निकला. पर हाँ, ये है स्केल 1 ऑफिसर सी. अब इसमें क्या है कि स्टेट बैंक एग्जिस्टिंग बैंकों के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है. पर क्या ये PO की रिप्लेसमेंट है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे कहीं ये पता नहीं लग रहा कि ये PO की रिप्लेसमेंट है. क्यों? क्योंकि एक तो ये केवल 7 सर्कल के लिए है. स्टेट बैंक में ज़्यादा सर्कल है, तो बाकी सर्कल्स का क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं ये पायलट प्रोजेक्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं PO अलग कैडर है, ये अलग है. तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं. ऑफिशियल कोई इस पे कम्युनिकेशन नहीं है. तो हमें एक्सट्रीम स्टैंड्स नहीं लेने हैं. एकदम खुश भी नहीं हो जाना है, परेशान भी नहीं हो जाना है. PO बैंक में ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, ये सर्टन हो गया. अगर मान लो इसमें से एग्जिस्टिंग बैंकों से 3500 लोग इधर चले जाते हैं, तो वहां पर वैकेंसी हो जाएगी. तो वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी. क्योंकि अगर ऑफिसर चाहिए बैंक को, तो वो आएगा तो मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसमें से ही आएगा ना. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो वो वैकेंसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो रही है. अब स्टेट बैंक में ज्यादा वैकेंसी आएंगी, नहीं आएंगी, PO आएंगी, नहीं आएंगी, ये जरूर एक प्रश्न चिन्ह बन गया है. पर यह भी क्लियर हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर. ऐसा नहीं है ये अनिश्चित काल तक रहेगा. इसके लिए कोशिश कर रहे हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने की. काफ़ी स्टेट बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं जो हमारे चैनल पे भी हैं, वो भी अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं. क्योंकि मॉडिफिकेशन तो की है स्टेट बैंक ने, जिसके अंदर उन्होंने जो पहले ऑल इंडिया होता था ऑफिसर, अब उसको अपने सर्कल तक ही ट्रांसफर्स होंगी. ये उसको एक बेनिफिट दे दिया और इसीलिए उसको सर्कल बेस्ड ऑफिसर कह दिया. अब PO की वैकेंसीज कब आती हैं, कैसे आती हैं, कितनी आती हैं, ये हमें वेट करना है. ऐसे एक्सट्रीम स्टैंड मत ले लीजिए CBO आ गया PO नहीं आएगा. ऐसा कुछ नहीं है. आएगा नहीं आएगा, हाँ, प्रश्न चिन्ह है. इसको हमें कूलली सोचना है, देखना है. पर ये थोड़ा ना कि वैकेंसी अबॉलिश हो गई है. इससे अबॉलिश नहीं हुई है. वैकेंसीज एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट हो गई है. हम ये कह सकते हैं कि ये जो अब मान लीजिए कोई A बैंक का ऑफिसर यहाँ अप्लाई कर देगा, तो वहाँ वो सीट भी तो खाली करेगा, वो भी तो किसी को मिलेगी. तो इसको ठंडे दिमाग से हमें सोचना है और इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देना है. आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं उस पर देखना है. मेरा कहना यह है कि किसी भी न्यूज़ से इतनी जल्दी हताश नहीं होना है, इतनी जल्दी खुश नहीं होना है. चेंजेस हो रही हैं, ऑब्वियस है, पर हमें उसके लिए तैयार भी रहना है. SBI PO आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिलती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा. यदि मैंने कोई इंफॉर्मेशन शेयर की और उसके अंदर वो थोड़ी प्रीमेच्योर है, तो इसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है. जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पर इंफॉर्मेशन वो सही होगी, सोर्स से होगी. किसी ऑफिसर ने कोई चीज़ बताई, वो आपके साथ शेयर की. 2 अलग अलग कम्युनिकेशन को मिक्स करके हमने एक इंफॉर्मेशन शेयर की. आप एकदम एक्सट्रीम स्टैंड्स मत लीजिए. ये मत सोचिए कि अब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कुछ भी. क्योंकि आप देखेंगे ये एक लिमिटेड सी चीज़ है. 7 सर्कल तक डिफाइंड है. ये पूरा ऑल इंडिया कवर नहीं इसमें हुआ है. और अगर कोई एक अफसर है ऑलरेडी और दूसरे बैंक में अफसर जा रहा है, तो मतलब अफसर की वैकेंसी तो क्रिएट हो ही रही है ना. कोई दूसरे सेक्टर से नहीं ले रहे, वो बैंक से ही ले रहे हैं. तो वो बैंक में वो वैकेंसी तो क्रिएट हो ही रही है.
तो हमें बहुत सोच समझ के चलना है, और जल्दी अपना ये ना हो कुछ लोग पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएं या कुछ लोग निराश होकर बैठ जाएं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप अभी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।